हेलो, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत का नक्शा। जी हाँ, आज हम जिस भारत को देखते हैं वो आखिर बना कैसे, इसका संवैधानिक आधार क्या है। चलिए इस पूरी यात्रा को थोड़ा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस बहुत ही शानदार कोट से। देखिए, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि संविधान निर्माताओं ने भारत को कोई पारंपरिक फेडरेशन नहीं बल्कि एक यूनियन यानी संघ के रूप में डिजाइन किया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि राज्यों ने आपस में कोई अग्रीमेंट नहीं किया है, और सबसे जरूरी बात, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई हक नहीं है। मतलब भारत अखंड है। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम संवैधानिक ढांचे से शुरू करेंगे, फिर संसद की शक्तियों को देखेंगे, भाषाई आधार पर उठे विवाद और आयोगों पर बात करेंगे, 1956 के बड़े पुनर्गठन को समझेंगे, और फिर देखेंगे 1956 के बाद नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैसे जन्म हुआ, और अंत में उनके बदलते नामों पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक ढांचे की, खासकर अनुच्छेद 1 और 2 की, जो बताते हैं कि असल में ये देश है क्या। संविधान का अनुच्छेद 1 बहुत ही खूबसूरती से कहता है, इंडिया दैट इज भारत। है ना एक दिलचस्प समझौता। आधुनिक और पारंपरिक दोनों नामों को मिलाकर हमारे देश को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वो विदेशी क्षेत्र जो शायद हम भविष्य में अधिग्रहित करें। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर, जो संसद की सर्वोच्च शक्ति के बारे में है। आखिर ये सीमाएं बदलती कैसे हैं? ये अनुच्छेद संसद को सच में बहुत बड़ी ताकत देता है। सोचिए, संसद जब चाहे नए राज्य बना सकती है, उनका एरिया बढ़ा या घटा सकती है, और तो और उनकी सीमाएं या नाम तक बदल सकती है। बस इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश चाहिए होती है। हाँ, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछा जरूर जाता है, लेकिन उनकी बात मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। इस बात को थोड़ा ऐसे समझते हैं। अगर हम अमेरिका से अपनी तुलना करें तो भारत का संविधान किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं देता। इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब राज्य तो टूट या बदल सकते हैं, लेकिन संघ कभी नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। लेकिन रुकिए, ऐसा भी नहीं है कि संसद कुछ भी कर सकती है। 1960 के प्रसिद्ध बेरूबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात साफ कर दी। अगर हमें भारत का कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को सौंपना है तो सिर्फ अनुच्छेद 3 काम नहीं आएगा। उसके लिए एक प्रॉपर संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, भाषाई आधार पर हुए आंदोलन और उससे जुड़े आयोग। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत तेज हो गई थी। शुरुआत में 1948 में धर आयोग और फिर JVP समिति ने इस मांग को साफ खारिज कर दिया। उनका कहना था कि प्रशासन की सुविधा ज्यादा जरूरी है। लेकिन दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 1953 में फजल अली आयोग ने माना कि हाँ, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को राज्य बनाने का एक प्रमुख आधार होना ही चाहिए। पर यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अक्टूबर 1953 में पोटी श्रीरामुलु जी की 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद इतना भारी विरोध हुआ कि सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा, और वो था आंध्र प्रदेश। बस यही से पूरे भारत के नक्शे को दोबारा सोचने की शुरुआत हुई। और यही चीज हमें ले जाती है 1956 के ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन की तरफ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन ने एक तरह से पुरानी स्लेट ही साफ कर दी। जो अंग्रेजों के जमाने की क ख ग घ वाली जटिल व्यवस्था थी, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और 1 नवंबर 1956 को उभर कर आए 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप सोचेंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों बने? दरअसल जो क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत अहम थे या जिनका प्रशासन थोड़ा अलग था, उन्हें सीधे केंद्र के कंट्रोल में रखा गया। अब देखते हैं 1956 के बाद भारत के नक्शे का विकास कैसे हुआ। ये 1956 का नक्शा तो बस एक शुरुआत थी। 1960 और 70 के दशक में बड़े बदलाव हुए। 1960 में बॉम्बे को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। फिर 1963 में नागालैंड वजूद में आया। 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ,
जिससे हरियाणा और एक नया केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। और फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका दोस्तों। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में बड़े बदलाव हुए। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य बन गए। और याद है जब हम नए मिलेनियम में आए, सन 2000 में 3 नए राज्य बने। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ऐसे ही क्षेत्रीय मांगों के साथ जुड़ते जुड़ते हम आज के 28 राज्यों तक पहुंच गए। इन सब में सिक्किम की कहानी बिल्कुल अलग और दिलचस्प है। 1947 तक ये एक शाही संरक्षित क्षेत्र था। फिर 1974 में 35वें संशोधन के जरिए इसे संबद्ध राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। वहां एक जनमत संग्रह हुआ, लोगों ने वोट किया और 1975 में 36वें संशोधन ने चोग्याल शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। अच्छा, उन जगहों का क्या जिन पर विदेशियों का कब्जा था? उन्हें भी बहुत ही स्मूथली हमारे ढांचे में शामिल किया गया। दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव जो पुर्तगालियों के पास थे, और पुडुचेरी जिसे फ्रांस ने हमें सौंपा था, इन सब को शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में, जैसा कि हमने देखा, गोवा जैसे क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अंत में बात करते हैं क्षेत्रों के नामों में हुए विकास की। दशकों से हुए इन बदलावों को देखिए। 1950 में संयुक्त प्रांत बन गया उत्तर प्रदेश, मद्रास बना तमिलनाडु और मैसूर बन गया कर्नाटक। 1991 के 69वें संशोधन से दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया और 2006 में उत्तरांचल बना उत्तराखंड और पांडिचेरी बना पुदुचेरी। ये सब अनुच्छेद 3 के ही कमाल हैं, जिसने कॉलोनियल इतिहास को पीछे छोड़ने और हमारी क्षेत्रीय पहचान को सम्मान देने में मदद की। तो 1956 के 14 राज्यों से लेकर आज के इस विशाल और जटिल नक्शे तक का सफर हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि प्रशासन की सुविधा और लोगों की सांस्कृतिक पहचान के बीच का ये बैलेंस आने वाले दशकों में भारत की सीमाओं को और कैसे आकार देगा। सोचने वाली बात है ना? क्योंकि हमारे संविधान की लचीली प्रकृति ही ये सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र का राजनीतिक नक्शा कभी भी स्थिर नहीं होता, ये लगातार विकसित होता रहता है। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Okay, look at a map of India today. Those borders, they look pretty permanent, right? Almost like they were literally carved in stone from day one. But the reality is actually far more dynamic. Today, we're going to dive into this explainer and explore the really fascinating constitutional framework and, honestly, the incredibly chaotic history of how India's internal borders were actually drawn. But here's a wild thought for you. Your state? It might not have even existed back in 1950. And, perhaps even more surprisingly, legally speaking, the Indian Parliament holds the absolute power to completely erase its current boundaries. No, really, it's true. The very ground you're standing on right now could be renamed, reshaped, or just merged into another state tomorrow by a simple parliamentary process. We're going to unpack exactly how that is legally possible. So to understand how this ever-shifting map evolved, we are going to logically break this down. First, India as a union of states. Second, diving into Constitution Articles 1 through 4. Third, looking at the state reorganization commissions. And finally, Part 4, India after 1956. Let's kick things off with Part 1, India as a union of states, or what I like to call the indestructible house. Article 1 of the Constitution firmly declares India, that is Bharat, as a union of states rather than a federation. And there's a really specific, critical reason for that phrasing. Dr. B.R. Ambedkar hit the nail on the head here. He explicitly stated that the Indian Federation is not the result of an agreement between independent states. Because there was no prior agreement, like a treaty, the states have absolutely zero right to secede. The country is one integral, indestructible unit. It's simply divided up for administrative convenience. This perfectly captures the core difference between the Indian and American setups. In the US, it's an indestructible union of indestructible states. The federal government there can't just erase a state's borders without its consent. But India is an indestructible union of destructible states. The central government here can legally alter or even entirely destroy a state's boundaries without ever needing the state's permission. So the house itself cannot be torn down, but the rooms inside, they can be endlessly rearranged. Which brings us to Part 2, Constitution Articles 1 to 4. This is basically the legal rulebook. If the states are destructible, what are the specific constitutional tools Parliament is using to draw and redraw these borders?
Well, it boils down to two key articles that give Parliament its powers. Article 2 is strictly for looking outward. It grants the power to admit or establish new, foreign territories into the Indian Union. Think treaties or new acquisitions. Article 3, on the other hand, is the engine for looking inward. It's the ultimate rule that allows Parliament to rearrange the states that are already sitting inside the House. Now, looking specifically at Article 3, Parliament has 5 distinct, completely sweeping powers to change the map. They can form a totally new state by splitting or combining areas. They can increase a state's area, shrink it, alter the boundary lines, or hey, even just change the name of the state. And what's really wild is that under Article 4, doing all this doesn't even require a special constitutional amendment. It just needs a simple majority in Parliament. The only real requirements are that the president has to recommend the bill first, and the affected state's legislature must be asked for its views. But get this, the president and Parliament are completely free to just ignore those views. All right, moving on to Part 3, State Reorganization and Commissions. Now that we know the rules of the game, let's look at the actual chaotic reality of 1950 and the commissions tasked with building a blueprint for our borders. So back in 1950, things were, frankly, a bit of a mess. Initially, the Constitution temporarily grouped 29 states into this highly complex 4-part system. You had Part A for the old British provinces, Part B for the princely states, then Part C and D, which were centrally administered areas. And these are actually the early predecessors to what we now call union territories. It was just a convoluted, temporary patch job trying to glue former British territory together with old princely states, and everyone knew it clearly wasn't going to work long term. Right out of the gate, there was a massive demand, especially down in South India, to redraw these messy lines based on language. But the early committees firmly pushed back on that idea. The Dar Commission in 1948 and the JVP committee that followed, which, by the way, featured absolute heavyweights like Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, they both flat-out rejected language as a primary metric for drawing states. They argued that administrative convenience and keeping the nation unified were just way more important at the time. But, as you know, you can't always bottle up a massive public movement. The pressure just kept building, and it culminated in a really tragic 56-day hunger strike by a Congress worker named Poti Sriamolu, which ultimately led to his death. This sparked immense public outrage, and it completely forced the government's hand. So in October 1953, they conceded, separating the Telugu-speaking areas from Madras to create Andhra Pradesh. And just like that, India had its very first linguistic state. And that was a massive domino effect. Once Andhra Pradesh was formed, everyone else suddenly wanted their own linguistic state too. This forced the creation of the Fazal Ali Commission in 1953. Now, this commission finally accepted language as a basis for statehood, but, and this is a really critical distinction, they outright rejected the theory of one language, one state. Instead, they said, okay, let's use 4 pillars for drawing borders: preserving national unity, linguistic and cultural homogeneity, financial and administrative viability, and above all, promoting the welfare of the people. This leads us right into our final section, Part 4, India after 1956. The Fazal Ali Commission basically paved the way for the State Reorganization Act of 1956, which finally abolished that messy 4-part system. So let's trace the construction timeline from there. The 1956 Act gave us a new baseline of 14 states and 6 union territories. But that linguistic pressure, it definitely didn't stop. In 1960, the massive bilingual state of Bombay was split into Maharashtra for Marathi speakers and Gujarat, which became the 15th state for Gujarati speakers. In 1963, Nagaland was formed as the 16th state to satisfy the demands of Naga groups. And then, in 1966, following demands from the Akali Dal, Punjab was divided. The Hindi-speaking areas became the 17th state of Haryana, and their shared capital, Chandigarh, became a union territory. Then we roll into the 1970s, which is where we see some absolutely massive structural changes, particularly over in the Northeast. In 1971, the Union Territory of Himachal Pradesh was bumped up to full statehood, becoming the 18th state. Just a year later, in 1972, the whole political map of Northeast India was heavily reorganized. Manipur, Tripura, and Meghalaya were all elevated to full states, becoming numbers 19, 20, and 21. And then in 1975, we get the really fascinating integration of Sikkim as the 22nd state. Actually, let's pause for a second because Sikkim's journey is just totally unique. Up until 1947, Sikkim was a princely state ruled by the Chogyal. After the British left, it became an Indian protectorate, which basically meant India handled its defense and foreign affairs. By 1974, Sikkim wanted a tighter relationship, so Parliament passed the 35th Amendment, giving it a completely novel associate state status. But even that didn't fully satisfy the democratic aspirations of the people there.
So, in 1975, following a massive public referendum that abolished the Chogyal's rule, the 36th Amendment was passed. This officially made Sikkim a full-fledged, integral 22nd state of the Indian Union. But the map kept right on evolving. The final major waves of the 20th century hit in 1987, when Mizoram, Arunachal Pradesh, and Goa achieved full statehood. Now remember, Goa was actually acquired from the Portuguese back in 1961 and had been a union territory all those years until this point. Then fast forward to the year 2000. This time, largely for administrative convenience and better regional development, some of the massive central and northern states were partitioned. Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh, Uttarakhand out of Uttar Pradesh, and Jharkhand out of Bihar. And remember how we talked about Article 3 earlier? Well, it wasn't just borders shifting. Regional identities were evolving too. Several states officially renamed themselves to better reflect their deep cultural and linguistic heritage. The United Provinces became Uttar Pradesh way back in 1950. Madras proudly became Tamil Nadu in 1969. Mysore transitioned to Karnataka in 1973. Later on, Delhi was specially designated as the National Capital Territory in 1992. And in 2006, Pondicherry embraced its historical roots, officially becoming Puducherry. So, just take a step back and look at the sheer scale of all this reorganization. It's pretty staggering. Over a span of just 44 years, the 14 original states and 6 union territories established back in 1956 dramatically multiplied to 28 states and 7 union territories by the year 2000. Honestly, it is a stunning testament to the flexibility of the Constitution, proving that our indestructible house can indeed completely redesign its interior to suit the changing needs of its people. As we wrap up this explainer, I really want to leave you with a question to chew on. We've seen how linguistic and cultural pressures historically fractured the map, and then how pure administrative needs drove the creations in the year 2000. So, as India continues to grow in population and economic complexity, what do you think is going to be the driving force behind the next line drawn on our map? Will it be language, culture, or just pure administrative efficiency? It's a fascinating question for the future of our indestructible union. Thanks for exploring this with me.